I'm आपका साथी Jamie Alter and welcome back to Cricket Fables. This is day 3 review of India versus South Africa at the Bull Ring, the Wanderers in Johannesburg. दोस्तों कल के दिन के बाद ये भी एक काफी रोमांचक दिन रहा. Perhaps not as gripping as the second day, but again this has been a fantastic contest between two teams. एक भारतीय टीम जो कि कंसिस्टेंटली दिखा चुकी है ओवरसीज टेस्ट मैचेस में क्यों वो पिछले किसी भी इंडियन क्रिकेट टीम से अलग है. वी सीन देम विन इन ऑस्ट्रेलिया, लगातार दो टूर्स पे ऑस्ट्रेलिया में. वी हैव सीन देम गो टू इंग्लैंड एंड लीड 2-1 before that fifth test at the Old Trafford was called off because of rising COVID cases. और अब साउथ अफ्रीका में India lead 1-0 and they have a very good chance. I still believe they are the favorites to win this test in Johannesburg and wrap up the series. South Africa need 122 runs more, 8 wickets left in hand. अब दोस्तों किसी भी अगर हम ट्रेडिशनल टेस्ट मैच के तौर पे देखें, जब तीसरे दिन के समाप्ति पर चौथे दिन को चलते किसी भी घरेलू टीम को सिर्फ 122 रन चाहिए 8 विकेट के साथ, तो आप कहोगे कि यार हाँ, चेसिंग साइड, होम साइड वो फेवरेट्स है. तो दोस्तों ये नया भारत है, ये बहुत डिफरेंट इंडियन टीम है एंड दिस इंडियन टीम डज नॉट गिव अप. इस टीम की जो बॉलिंग है बहुत बहुत खास बॉलिंग अटैक है ये. एंड आई फुली बिलीव कि ये जो 122 रन है, अगर दक्षिण अफ्रीका बना भी लेती है ये टारगेट, तो आसान नहीं रहेगा. इंडिया विल मेक लाइफ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू टेक द रिमेनिंग विकेट्स बिकॉज वी हैव सीन बुमराह, सिराज, शामी, शार्दुल ठाकुर, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर consistently throughout this series and over the last 1 year of overseas test cricket, how these four fast bowlers have made life very difficult for opposing teams. Yes, right now it's on an even keel. आप ये नहीं कह सकते हो कि इंडिया एक सेशन के अंदर बाकी 8 विकेट्स ले लेगी या साउथ अफ्रीका 122 रन एक सेशन या दो सेशन में बनाएंगे. इट्स रियली ऑन एन इवन कील एंड दिस दोस्तों इज व्हाट टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट. स्टंप्स इन द सेकंड टेस्ट, साउथ अफ्रीका 118 दो विकेट के नुकसान पे 122 रन चाहिए. डीन एल्गार कप्तान जो है वो 46 पे खेल रहे हैं 121 बॉल खेल के. और जो स्टंप से जो 15-20 मिनट थे उसमें जो लगातार एक फास्ट बॉलिंग बराज जो डीन एल्गर के ऊपर आई है, यहाँ लगा, कंकशन सब्स्टिट्यूट की बात हुई थी, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. दिस शोज एक तो कि डीन एल्गर जब अपनी विकेट पे एक प्राइस लगाता है, जब वो झटके खेलते हैं, हाउ टफ ही इज टू डिसलॉज. दिस इज टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट व्हेन अ बैट्समैन इज प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ, प्रोटेक्टिंग हिज स्टंप्स, प्रोटेक्टिंग हिज टीम अगेंस्ट अ वेरी वेरी सुपर फास्ट बॉलिंग अटैक. और बुमराह हो या शार्दुल हो, जो अटैक डीनगर पे इन लोगों ने किया है, इट जस्ट शोज व्हाई दिस इज द टफेस्ट एंड द मोस्ट रिवेटिंग फॉर्मेट ऑफ ऑल. देखते हैं यहाँ पे कुछ सवाल आए हैं हमारे व्यूअर से तो मैं लूंगा. बट यस, जैसे कि मैंने कहा था, दिस इज डे 3 रिव्यू. अगर आपके पास कोई सवाल है तो बेशक आप मुझसे पूछ सकते हैं. मैं यहाँ पे जुड़ा हूँ आपके साथ, आप ही के लिए मैं यहाँ पे जुड़ा हूँ. एंड अगेन इट जस्ट गोज टू से, जैसे कि मैं कह रहा था कि इस इंडियन टीम के चलते, जी हाँ ये विराट कोहली की टीम है, लेकिन जब वो घर गए थे एक साल पहले ऑस्ट्रेलिया के टूर से, तो अजिंक्य रहाणे लेड एडमिरेबली. और यहाँ पे केएल राहुल ने भी ठीक ठाक कप्तानी करी है इस भारतीय टीम की. But overall, forget who's leading. It is about the resilience that this team shows every time, every match. मैं घरेलू क्रिकेट के बारे में बात ही नहीं करूंगा क्योंकि विराट कोहली के अंदर जो लेवल्स, जो स्टैंडर्ड सेट किया इस इंडियन टीम ने, अनमैच्ड बाय एनी इंडियन टीम ऑफ द पास्ट. लेट्स फोकस ऑन ओवरऑल ओवरसीज टेस्ट मैचेस बिकॉज दिस इज आफ्टर ऑल what Indian teams are expected to do. Go overseas and win if you want to become World Test Championships. यहाँ पे आए दो कमेंट्स. बीके मल्ली, ग्रेट वीडियो, थैंक यू माय फ्रेंड. एंड मानव जवेरी इज बैक. मुझे लगा था 250 के आसपास काफी होगा टारगेट, लेकिन अब मुश्किल लग रहा है. हाँ देखिए, 200 250 के पास अगर टारगेट होता तो बिल्कुल ये ठीक होता. लेकिन मानव मेरे दोस्त, जैसे कि मैंने कल कहा था, I still believe that 170, 180 would be a fighting total. चलिए, अब टारगेट उससे ज्यादा है, 240 के आसपास है टारगेट. बिल्कुल टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम डीन एल्गर ने जो प्राइस लगाया अपना विकेट पे, बट ये वो 90 के दशक वाली इंडियन टीम नहीं है. ये 2000, 2005, 6, 7, 8 वाली इंडियन टीम नहीं है. ये नया इंडिया है. They do not give in like many
greater, more talented Indian teams of the past would have collapsed overseas. इसी टीम की बात करें, ये इस टीम ने भी 2018 में इसी साउथ अफ्रीका देश में एक सीरीज हारी 2-1। बट तीसरे टेस्ट मैच पे जोहानिसबर्ग में जो फाइट बैक उस टीम ने दिखाया उसके बाद, हाँ, हारे हैं 2-0 न्यूजीलैंड में हारे हैं, इंग्लैंड में हारे हैं 4-1 2018 में। बट दे प्रोग्रेसिवली शोन कि ये यहाँ पे compete करने नहीं आए, ये यहाँ पे जीतने आए। तो जब तक वो आखिरी विकेट ना गिरे या आखिरी रन साउथ अफ्रीका के किसी भी बल्लेबाज के बैट से ना आए, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई भी टीम यहाँ से फेवरेट है। कल का जो सेशन होगा, खासकर पहला सेशन का पहला घंटा, उसी में जो है दोस्तों, ये मैच पलटेगा। फ्रेश स्टार्ट, बॉलर्स घर जाएंगे, होटल जाएंगे, आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, और नए दिन नए जोश के साथ ये भारतीय टीम के तेज गेंदबाज आएंगे। और मुझे लग रहा है, जैसे कि मैंने कल कहा था इसी शो पे, गट फीलिंग है मेरा, इंडिया विल रैप अप विक्ट्री टुमारो इन द फर्स्ट सेशन। Yes, 122 runs does not seem like a lot given the fact that Dean Elgar is set on 46, but इस साउथ अफ्रीकन टीम में बैटिंग की कमी है, दे हैव बैटिंग वीकनेसेस। और जिस तरह से ये वॉन्डर्स का पिच खेल रहा है, अप एंड डाउन बाउंस, सम बॉल्स आर जिपिंग इन, सम बॉल्स आर मिसिंग द स्टंप, सम आर स्टेइंग लो, सम आर राइजिंग अप, बैटिंग इज नॉट इजी दोस्तों। आप स्कोर कार्ड देखेंगे तो आप करेंगे यार 118 पे 2 है, ये मैच साउथ अफ्रीका के हाथ में है, स्टिल इट्स नॉट इजी। एंड आई बिलीव कि इंडिया की जो तेज बॉलिंग अटैक है, वो इस मैच को रैप अप कर सकते हैं पहले सेशन में। डीन लेगर के काफी शॉर्ट बॉल डाल दिए आज, कुछ और ट्राई करना चाहिए। नहीं, देखिए, मानव, जब एक टीम लगातार 3 तेज गेंदबाजों से किसी भी बल्लेबाज या किसी पैर को शॉर्ट बॉल से टारगेट करती है, तो यू नो कि दे आर ट्राइंग टू अनसेटल हिम। दे नो कि अगर हम फुल डालेंगे तो शायद एज नहीं आएगा, क्योंकि बैट्समैन वो लीव कर रहा है लगातार, ही इज ट्राइंग टू लीव द बॉल, ही इज प्लेइंग फॉर टाइम, ही इज ट्राइंग टू बैट आउट अ सेशन, ट्राइंग टू गेट टू स्टंप्स। तो इसके साथ क्या क्या होता है मेरे दोस्त, then you try to unsettle him. So bounces are the easiest thing to do. It's not so simple. You have to bowl the short ball tactfully in the right leg. So फिलहाल इंडिया के तेज गेंदबाजों ने करा है वो डीन एल्गर के खिलाफ. So it's been a riveting contest, and I think that contest will continue tomorrow for the first session. Elgar might get a 50, he might get 60, 70. पर अगर दक्षिण अफ्रीका को ये मैच जीतना है तो डीन एल्गर को पूरी पारी खेलना पड़ेगा. He'll have to finish with 80 or 90 or 100. Otherwise, I still back India to roll over South Africa in the first session tomorrow. Saksham Kumar, run rate is also important. Later half of the session, South Africa slowed down their scoring rate. पता नहीं यार साक्षम मेरे दोस्त, ऐसे सिचुएशन में टेस्ट मैच में रन रेट कितना इंपॉर्टेंट है. It's only 3 days left, right? Technically, there are 2 full days left. So South Africa could, if they wanted to, and if luck favors them, they could bat on the whole day and leave 3 runs to get on day 5. ऐसा होगा नहीं, ये टोटली इलॉजिकल है. पर जब एक टेस्ट मैच में 3 पारी खत्म हो चुके हैं 3 दिन के अंदर, और चौथी पारी अभी चल रही है, what is run rate? What does 2 days have? You have 2 days. So I don't think run rate has to do too much with the situation right now. So South Africa will be thinking, Dean Elgar, get a 50, get a 70, convert it to 100, finish the match off. Rassi Vanadus and stick around. जो भी आएगा इसके बाद थोड़ा कप्तान को सपोर्ट दे. India will be thinking flat out, take wickets. 8 wicket चाहिए. Ashwin has got his tail up, but I just think the 4 fast bowlers after a night of rest will come out so charged up. खासकर शामी और बुमराह, इन पे आप नजर डालिए. ये दोनों फास्ट बॉलर मेरे हिसाब से कल पहला सेशन में मैच खत्म करेंगे. शार्दुल bowling too much on leg after taking 1 wicket, making strike rotation easy. Yes, good point, good observation. आप ये कह सकते हो, but Shardul has been the hero with 7 for 61 from 17.5 overs. It's only his sixth test match. He can be excused for perhaps getting a bit carried away, but all said and done, he provided the breakthrough. तो अगर आप कहेंगे इसके बारे में कि ये थोड़ा harsh होगा, but again, I just think when it's been a long day, आपने batting करी, आपने bowling करी, the emotions can take over you. With a good night's rest, hopefully, अगले दिन Day 4 के सुबह पे, I think you'll see a different Shardul and a different Indian fast bowling attack. Jax Walker. Is this a cakewalk for South Africa? Can India pull off another miracle? Look, I don't think it's a cakewalk, and it's definitely not going to be a miracle. If India win, अगर India जीती भी, तो आप यहाँ इसको आप miracle नहीं कहोगे, क्योंकि दोस्त, this is a low-scoring series. We've seen both pitches, that is Centurion and Johannesburg, have not been easy. Batsmen have to grind it out. They've had to take body blows. We've seen balls staying low, inconsistent up and down bounce. India were the better team, batting and bowling.
at century. And here overall, barring the collapses, they've showed the fire. We've got Ashwin in the first innings getting 46. आज के दिन हनुमा विहारी ने 40 मारे. Pujara and Rahane got 50. So they've shown more than the South African batsman. It's probably a 80-90 comparison या 19-20 जो हम कहते हैं हिंदी में comparison of the two battings. South Africa need a Elgar to bat out the whole innings and finish the match. Far from a cakewalk because India's bowling has been too good in overseas conditions. But if India do win, which I firmly believe they can, on the fourth morning, you will not call this a miracle. Like we saw in England recently when the odds were stacked against them and time was running, India chased the clock, they beat the clock, and they took wickets at the Oval and also at Lords. So show that they can really force the pace when it has to be done. So yes, I'm fully backing India to win tomorrow. Perhaps South Africa are a little bit ahead right now on the basis of being only 2 wickets down. But if they do win, I would not call this a miracle. I hope that makes sense. Jax Walker. Any more questions coming in? If not right now, koi baat nahi. Like karo guys, like and share. Let's get the like. We have 8 likes so far. Always good to see the like count higher in these live streams. Look, overall, we've seen a lot of talk about how Virat Kohli ke absence mein how KL Rahul has done. I think he's been okay. A couple strange calls, namely delaying Shardul so much yesterday on day two into the attack. But when the batting has been decent, I would not say it was outstanding today. I think the way that Pujara and Rahane, जिस तरह से इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू किया था. In fact, we had a question yesterday. I forgot who asked the question, but somebody said, I would like to see Rahane and Pujara get big 50s. And I said to that point, I said, यार ये big 50 क्या होता है? 70, 75, 80, 90, 93 क्या? बात 50s की नहीं है. बात है इन दोनों की जरूरत है बड़े शतक लगाने की. Now, it's a tough pitch. You can say कि यार जब किसी ने रन नहीं बनाए एटलीस्ट पुजारा और रहाणे ने 50 मारी हैं. But it could have been so much more. They both were cut off shortly after getting to their respective 50s. This was a prime situation where they could have really gone on and gotten to big innings. And I'm talking about hundreds, 110, 120 in a low scoring series would be a massive score. They did not. That's not to say that they underperformed. उन्होंने अपना काम किया. They have definitely put some critics at bay. They have earned the right to play a few more test matches. But overall, I think if there's one level of criticism which we can talk about, it's the fact that these two batsmen did not take it higher. आपने 50 मारे, आपने 52 मारे, जो भी मारे आपने convert क्यों नहीं किया, Second talking point, ऋषभ पंत ने जो गंदा शॉट मारा, हम कब तक कहेंगे कि यार ये मैवरिक है, ये ऐसा खेलता है. ये बहुत ही खराब शॉट था ऋषभ पंत द्वारा. अभी 2 विकेट इंडिया ने गंवाए थे और आप आगे बढ़े एक तेज बॉलर पे, looking to go over cover, and you nicked and then you kept on walking in your follow through. A very disappointing shot from um, from Rishabh Pant. Yes, he's played such shots before and it's come off, and he's won matches for you. ये इनका अंदाज है, ये उनका यूनिक स्टाइल है. पर कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ को बोलना पड़ेगा, विराट कोहली को बोलना पड़ेगा, विक्रम राठौड़ को बोलना पड़ेगा कि यार ऋषभ, ऐसे सिचुएशन में नेचुरल गेम को बैक करना एक चीज होता है, लेकिन थोड़ा बॉलर को देख के, रिस्पेक्ट करके ऐसे फालतू शॉट्स मत मारो. And I'm sure there'll be a lot more discussion on Rishabh Pant's batting as this series continues, as the whole year continues, because that's the kind of player he is. He's a maverick player. मानव जावेरी, हमारे ऑलराउंडर्स को क्या ये बोल के भेजा जाता है T20 मोड में खेलना है, जड्डू होता तो गेम को और सेट करता. एक कमेंट में 2 मुद्दे आपने उठाए हैं मानव मेरे दोस्त. जड्डू की बात करें तो बिल्कुल जड्डू ऐसा नहीं खेलते जिस तरह से ऋषभ पंत ने खेला. He would stick around. He would have played more of the Vihari type role, getting a 40 not out. He would have put a price on his wicket and only attack जब 9 विकेट गिरे होते. Because इनका जो natural game है जडेजा का, he can find the gaps, he can hit big shots. So I think definitely उस जडेजा जैसे प्लेयर की कमी आज महसूस हुई थी. But again, I don't know who is told to it. शार्दुल ठाकुर की बात करें, वो उनका natural game है. He likes to take on the bowlers and back himself. तो वो जो रन मारे शार्दुल ने, it took the target to 200. And in that situation, it was a very vital innings. He came and he countered the way that Bihari played and Ashwin played by going bang bang. चलिए, ऋषभ पंत ने भी ये किया था, पर वो आज नाकामयाब रहे. Shardul backed his game, and even the way he got out playing his shots. I don't think आप कह सकते हो कि यार ये क्या गंदा शॉट खेल के ये लड़का आउट हुआ है. He did his job.
He's not a main batsman. His job is to come in and provide cameos. और हमने देखा है उन्होंने गैबा, ओवल, लॉर्ड्स, ट्रेंट ब्रिज इन शार्दुल ने आके ऐसे कैमियोज खेले हैं in his brief test career. So I think he probably had the instructions to go out. If not, he had the license के शार्दुल तू थोड़ा रन मार जल्दी, because ऐसे low scoring series में ऐसे छोटे cameos बहुत important होते हैं. So no problem with that. And if the message was to go out and hit, good job done by Shardul. Sarvesh, will Pujara and Rahane retain their place? Absolutely. I think for the third test they have held down their place. लेकिन ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, because look, Virat Kohli is going to come back for his 99th test match. Who do you drop? Pujara, I would say वो safe है 3 पे. क्या आप रहाणे को ड्रॉप करोगे जिन्होंने इस मैच में पहली पारी में गोल्डन डक लगाया, गोल्डन डक, और सेकंड में एक क्रूशियल 50, पोटेंशियली मैच शिफ्टिंग, मैच विनिंग 50? विहारी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण 40 रन बनाए, which also equally could prove the decisive factor between the innings. So very tough call for India between Rahane and Vihari, जिन्होंने दो बहुत ही important पारियां खेली आज के दिन when it comes to picking the squad for the third test match when Kohli comes back. It's not going to be an easy job for them. So who knows what happens? Saksham Kumar, Vihari played beautifully. Absolutely. He held the tail together. He stood there. He put a price on his wicket. And like I said, his 40 could in the end prove the difference between the two teams. Fantastic innings. Asim, Jamie Bhai, should Vihari open in place of Mayank? Look, I think Vihari is, yes, उन्होंने वो काम किया था 3 साल पहले, but I still think किया अपने ब्रीफ इंडिया टेस्ट करियर में, ही शोन दैट ही इज टू मिडल ऑर्डर. अगर मयंक कहीं ना कहीं इंजर्ड हैं और वो नहीं खेल पाएंगे, तो आपके पास प्रियंक पंचाल है. आई वुड रादर सी अ स्पेशलिस्ट ओपनर do the job than once again put Vihari in the uncomfortable role of doing a job that he's perhaps not best suited to. I hope that makes sense. Nakul Saini, ball has started spinning. Maybe Ashwin going to play a big role tomorrow. I would love to see Ashwin do it. Ashwin is a fighter. और अश्विन के साथ जो हुआ था इंग्लैंड में 4 टेस्ट मैच के लिए वो बाहर बैठे, आई एम श्योर he'd be itching to have a huge say on this match. He's bowled some overs. He's not got the wickets you would expect from him. But then again, this has been a rather fast bowlers series, and the pitches have aided fast bowling more than spin bowling. But again, Ashwin, जितना मैं उन्हें जानता हूँ up close and personal, and जो उनका record है, he could have a big role because he gets the ball to bounce, and that, just like Nathan Lyon does in Australia, that could be the factor as well for India. Tara and Rahane had good scores in the second innings. Can this innings by each of them be a stepping stone, both them, and regain their test masterclass? You would hope so, Jax Walker. But like I said yesterday, and like I spoke a few minutes ago, it was not so much about them getting to 52 and 58 and all. They needed to convert those scores into hundreds. We've seen them both, especially Pujara. Over the last three, he's gone 3+ years without getting a test century, but he's got the 50s, 60s, 70s, 80s. He's not got three figures. And what getting three figures does to a batsman's confidence and psyche cannot compare to a match shifting, match winning 52 54, in my opinion. So, yes, they both played very well today. They'll both be kicking themselves for getting out after playing so well to get to their 50s. But this was a case for them, a platform for them to get bigger scores. They didn't. I hope their contributions end up contributing to an Indian win, but there is a bit of criticism of the fact that both of them got out in the span of relative um, um, back to back without getting big scores could also be leveled against them. So it's a tricky one. Saksham Kumar, I would drop Rahane and retain Pujara and Vihari. Yes, a lot of people would probably agree with you, Saksham. That's just how it is because Rahane got a golden duck, and just given the fact that he's been so inconsistent over the last year and a half, and Bihari has not got chances. आपको याद ही होगा कि बिहारी का पिछला टेस्ट मैच सिडनी में था साल के शुरुआत में, जहाँ पे आखिरी दिन पे उन्होंने अश्विन के साथ, तो both them were injured. They battled pain to take India to a famous draw, and that has to count for something. So let's see whether Rahul Dravid and Kohli and the management feel that Bihari's got enough brownie points to get a game ahead of Rahane. Had Rahane and Pujara played through till second session a little slower, the impact could change. Yes, Sarvesh, that's a good point. आपकी बात सही है. But I think जिस तरह से उन्होंने खेला उस time पे, they backed themselves to try and score quickly.
because of how tough the pitch was at that time. I think they probably thought, yeah, chalo, survival perhaps is not our best way. Perhaps if we can score quick runs, take the attack back to South Africa, we might ourselves get out of our rut. It worked for them as long as they were at the crease, but then they both got out, and then the innings sort of gave away. But again, that crucial cameo from Shardul, and then Vihari batting all the way to that 40, a very, very vital inning. So, three good innings, but you would expect and hope that Rahane and Pujara had scored more runs. Abhi, what about Pant? What's he doing? Yes, Abhi, like I said earlier on the show, Pant should be kicking himself for that shot. We have talked many times about how that's the way he plays. He's a maverick player, and I still back him to do a lot more for India in Test cricket. I think he will end up winning India more matches than losing. But yes, when he plays a shot like that amid a collapse on a match shifting third day, charging down, trying to hit the cover off the ball against a fast bowler and edging it in such a T20 slog. I mean, देखिए, he's not playing for Delhi Capitals. He's playing for India in a test match, overseas test match. So that was a very, very irresponsible shot from him. And I hope the Indian team management, Dravid, Kohli, Vikram Rathod, they take him aside and say कि भाई ऋषभ तू अपने अंदाज में खेल लेकिन कभी कभी अपने गेम को adjust कर अपने गेम को temper कर to suit the needs of the team. You're not always going to do a Chennai or a GABA, or a Sydney. थोड़ा आपको responsibly खेलना पड़ेगा. So yes, I'm sure Pant of all people knows how bad his shot he played today. मानव बुमराह ने अपनी बैटिंग पे काफी काम किया लगता है उसको शमी से ऊपर आना चाहिए अब हाँ लगता है देखिए वो थोड़ा मानव डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है बुमराह ने एक टूर मैच में एक बार वेस्ट इंडीज में 50 मारा था और फिर उनको प्रमोशन दिया गया था फिर वो नहीं चले ओवरऑल अगर शामी की बात करें शामी ने फिर भी एक तो थोड़े सीनियर प्लेयर हैं बुमराह से तो उनकी एक स्टेटस लेवल पे उनको आगे भेजा जाता है और शमी की ये क्या बात है कि यू होप के अगर वो चल जाए उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो शामी और उमेश से आप वो नहीं एक्सपेक्ट करते हो जैसे कि बुमराह और ईशांत शर्मा थोड़ा टिक के खेलते हैं क्रीज पे आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि जाके थोड़ा टांग दें क्योंकि इनकी नेचुरल गेम इतनी अच्छी नहीं है एंड इफ दे कैन इंजेक्ट क्विक रन्स it's better for the team. And Shami has done this a few times, but आज उनका दिन नहीं रहा. But it was good to see Bumrah put a price on his wicket in both innings. So hats off to Bumrah for that. What do you think? Where is this match going? 1-1. Yes, it's not unforeseeable. जैसे कि मैंने कहा था शो की शुरुआत पे कि दक्षिण अफ्रीका ये आगे के 120 रन जो चाहिए they go and chase it down. There are 8 wickets left, but it's not an easy track for batting. And I feel once again that with a good night's sleep, with some time to refresh and recharge, India's bowlers will come out raring to go on day 4. And somehow I just feel India can really turn this into a nail biter and win this match by a small margin to seal their first Test series win in South Africa. That's my gut feeling. Abhi. Dhiraj, India missed Kohli leadership. Yes, you did. But again, that just goes back to जैसे कि मैंने कल कहा था यहाँ पे. KL Rahul is not a proven captain. He's not got enough opportunities in domestic cricket, be it for Karnataka, be it for India A, to lead teams consistently. Captaining in the IPL is one thing, but he's not got enough chances to show that he's the man. But again, taking nothing away from him, India's team management saw something in him and feel that he's a deserving vice captain. And when the captain is injured, जब कप्तान किसी भी कारण मैच के लिए अवेलेबल नहीं है, तो फिर कायदे से आपको वाइस कैप्टन को आपको कप्तानी देनी पड़ती है. And I just think that overall, a couple attacking fields were missing. There were times when he removed a slip, he didn't keep a third man. Runs were steered through there. And then yesterday, day 2 के दिन पे जब उन्होंने डिले किया था शार्दुल की एंट्री, वो कहीं ना कहीं थोड़ी वीकनेस लगी मुझे केएल राहुल की. Abhi, what changes are you expecting for the next game? Well, Abhi, like I just said a few minutes ago, no bowling changes unless Mohammad Siraj is not fit. And in case Agarwal, we saw him get injured on the boundary, saving a 4. If he's not fit, I would expect Priyank Panchal to make his debut क्योंकि वो ओपनिंग करते हैं वो 6-7 हफ्ते के लिए वो साउथ अफ्रीका में है इंडिया ए के साथ एंड देन अगेन इट्स अ वेरी वेरी टाइट कॉल बिटवीन रहाणे and Vihari in the middle over. Rahane got a golden duck in the first innings, got a very, very fluent 50 in the second, but Vihari got that 40 not out, which, like I said earlier, could prove the difference between the two innings. So, a very, very tight call. I would say
If Agarwal plays and if Siraj plays, the only call would be between Bihari and Bahane because Kohli has to come back. And could we see Ishan Sharma instead of Siraj? Look, my friend Jay, I know that ईशांत शर्मा has been a much improved bowler for a 3 year period. उनके पास 300 से ऊपर टेस्ट विकेट हैं, but he's looked stiff. He looked a little stiff in the second half of the England tour. और हाल ही में जब वो खेले एक घरेलू टेस्ट मैच, he was very stiff. In these conditions, and especially knowing how the bounce has been up and down, I would actually prefer Umesh Yadav getting a chance. A slightly younger, a slightly fitter, a slightly quicker Umesh Yadav playing instead of Siraj over Ishan Sharma. That's my view on the matter. That is, if Siraj's hamstring actually rules him out of the third Test match. That's the recap of day three. Any more questions? I'll hang on for a couple more minutes. Otherwise, it's been a pleasure once again interacting with you and talking to you about cricket, खासकर Test cricket. Question, Sarvesh, what should India change or improve in their bowling now after today? Well, like you mentioned, Shardul was a bit too straight. Siraj is not at his best. I just think the short ball attack जो इन लोगों ने आज किया था शाम को स्टंप से पहले बेहतरीन था, अच्छा ऑप्शन था. But you don't want to bowl so many short balls that you allow the batsman time to leave and leave and leave. क्योंकि इसके चलते उनको क्रीज पे रहने का मौका मिल रहा है. और दूसरा, आप ऋषभ पंत को थोड़ा exert कर रहे हो. We saw a couple balls fly over his head, you know. वो छोटे कद के हैं पंत. You don't want to have him chasing too many balls over his head because those end up being free runs. Mix it up, bowl some short balls, but hit that typical second inning Shami length. आप बॉल को उस टप्पे पे डालिए upright seam के साथ जहाँ पे वो अंदर कटे और थोड़ा बैक ऑफ अ लेंथ पे पड़े और इनकंसिस्टेंट बाउंस का फायदा उठाए. आई स्टिल बिलीव दोस्तों कि इंडिया अपने तेज बॉलर्स, अपने तेज गेंदबाजों के बल पे कल सुबह ये मैच जीत सकती है अगर वो सही जगह पे डाले और वो इनकंसिस्टेंट बाउंस का सही उपयोग करे. दैट इज get a lot of LBWs coming in. We've seen the batsmen. जो भी बल्लेबाज आज इस फाइनल इनिंग्स में बैटिंग करने आया है उनको लीव करना पड़ा, उनको एडजस्ट करना पड़ा, उनको तेजी से बैट नीचे लाना पड़ा इनकमिंग बॉल्स पे. कीप इट अप, hit the right lengths back. This wicket is going to deteriorate. There's still 2 whole days left in this match. Use the crease well, come a little bit closer to the stumps, hit the cracks, and especially Shami and Bumrah. ये दोबारा मैं कहूंगा दोस्तों, कल के दिन day 4 first session, watch Shami and Bumrah, and I think they will be the people, the bowlers who will change this match. I have Shami down for 4 wickets. I have Bumrah down for 3 wickets. बाकी तो देखते हैं शार्दुल क्या करेंगे. ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच मेरे साथ यहाँ पे जुड़ने के लिए इस चैनल पे. I'll see you again for day 4 recap, which either way should be the final day of a very riveting test match. Please like, share, and subscribe. And thank you for all your comments. Thank you for taking out time to come and join me, Jamie Alter, on this channel. And I will see you tomorrow after day 4. Good night.